One. Are we live? Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Pakistan Experience. And as always, Pakistan is in the midst of a crisis. तो हमें तो लोग गालियां देते रहते हैं, हमारे तो opinion की ज़्यादा value नहीं होती. For somebody whose opinion is actually valued, we thought we'll call him here. Mr. Mosharraf Zaidi, how are you, sir? I'm very good. आपको भी गालियां पड़ती रहती हैं? आपको भी पड़ती है सर. I thought आप तो बहुत नाप तोल के अल्फाज का चुनाव करते हैं. नहीं, वो तो फिर वो नापने तोलने पे पड़ती है कि तुम हमें पता है तुम अंदर से क्या हो. और वो अभी रिसेंटली एक नया फिनोमेना है. पिछले 2-2.5 हफ्ते में मैंने नोटिस किया कि वो बहुत सारे नूनी जो हैं वो कह रहे हैं तुम यूथी हो अंदर से और ये ड्रामे करते हो. तो मतलब इट्स I saw a tweet last week कि किसी ने ARY को गालियां दी हुई थी over the Sunday protest. कि पहले तो बड़ा एक्साइटेड होके आप हमारे प्रोटेस्ट कवर करते थे, आज आवाज में वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आए. I'm like, if ARY can't appease them, what chance do we have at this point? But you know, I mean, I think we make jokes, but this isn't funny, man. I think that, you know, he's tapped into something that's quite profound and in my view dangerous, but you know, my view doesn't matter. वो जिस तरह से लोगों को चार्ज किया हुआ है उसने, वो अगर sustain कर जाते हैं, and I think we'll see a pretty big show on Thursday in Peshawar. Let me ask you, Shahzad, were you expecting the Sunday turnouts to be as large as they were? I wasn't. I'm actually impressed by their turnout, but इस बात पे मुझे बुरा भला शायद कहा जाए, but I do feel जो core constituency है PTI की, it's that urban middle class. वो एक रात आ जाएंगे, वो sustain नहीं कर सकते. Had they had a protest on Monday as well, the next day, उसका I think 25% turnout भी नहीं होता. Yeah, I mean, I think that converting protests into electoral action and success, and then converting that success into governance capability, ये तो अब, I think vastly it's been proven over and over again, and I think people are really excited. People kept saying this is Pakistan's Tahrir Square moment. I've been answering questions about Pakistan's Tahrir Square moment since before Tahrir Square, right? Because everybody's like, okay, so is this the moment? And people that are waiting for that moment, I don't think they've looked at a map of Pakistan or, you know, looked at how many languages are spoken in Pakistan, or really understand how difficult it is to mobilize the notion of national in Pakistan. The most successful national moments in Pakistan probably were produced by Zulfikar Ali Bhutto, and, you know, he went to war in Balochistan, went to war in Khyber Pakhtunkhwa, back then it was NWFP, clearly went to war or was forced into war or whatever you want to call it with East Pakistan. And that was at the height of this national moment, of this coming together moment. It's very difficult for Pakistanis. It's easy for Pakistanis to sit together and decide, यार NFC जो है वो एक अच्छा सा NFC बना लेते हैं, थोड़ा लेन देन कर लेते हैं, वट्टा सट्टा कर लेते हैं, मुख कर लेते हैं. ये मैं term deliberately use कर रहा हूँ. I think that part is easier when you have this kind of approach of openness and tolerance and everything. Like you see with this coalition that's just taken over. I mean, these guys aren't, you know, they're not the same. They're vastly different. Lekin, for a brief moment in time, they've come together. That part's easy. But under one banner, everybody aligning and saying, yeah, this is my guy and I believe him and or her and everything he or she says, and let's all go in together. Wo abhi tak to nahi hua. I don't claim any powers to predict, especially in the last few years. Predictions to hamari bahut sari galat nikli hai na. So I think with a lot of humility, I would say that we haven't seen it yet, and it would be really surprising to see it emerge. It's interesting कि where we left our last podcast, मुझे लगा कि हमने काफी recently किया है. अभी मैंने डेट देखी तो actually 1.5 साल हो चुका है. We left it with you saying, I hope people come together. You know, despite disagreements, एक civility होनी चाहिए, गले मिलना चाहिए. How did you see that turning out? It's hard to live in the digital age with this fantasy of coming together, of growing together, of respectfully and kindly engaging with each other. And
finding ways to ignore what we don't agree on and to double down on what we agree on, right? So you and me, let's say there's 100 issues in the world that we care about and we disagree on 25 of them. तो जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम है ना, उसने हमारे दिमाग के अंदर ड्रिल करके और एक वो डाल दिया, चिप डाल दिया, और उस चिप में वो जो 25 इशू है ना जिस पे हम डिसएग्री करते हैं, उसमें से जो 5 हैं जिस पे हम सबसे ज्यादा डिसएग्री करते हैं, मैं और आप सिर्फ उस पे एक दूसरे से बात करेंगे. We'll never talk about the 75 things that we agree on, the 20 things of those 75 things that we passionately agree on. We'll always talk about the 5 things out of the 100 that, you know, make us hate each other. I know मैं खुद गिल्टी हूँ, मैं कभी कभी मस्ती में कुछ चीजें पोस्ट कर देता हूँ. I don't know if you've been following me since then, but since we last spoke, मैंने आपकी बात बड़े दिल पे ले ली थी. मैं अब इतनी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता. जो 50% मेरा उसका शेयर था, मैं उनसे दूर रहता हूँ. फिर भी फंस में जाता हूँ कभी कभी, वो दूर की बात है, बट अब मैं काफी दूर रहता हूँ comparatively. I actually have noticed, Shahzad. I was speaking to somebody else. You know, I'm seeing these people who are, you know, substantially younger than me, and I'm seeing how they're growing and emerging, and I get really excited and happy. Imran Khan as an op-ed writer, whew, what sort of fluent and beautiful writing, right? Abdul Muiz Jafri, and it just, I mean, especially the last couple of months, really sort of very, very fine exposition. So, and having known them for a while, both of them, Jafri ko main, you know, I mean, 10 saal se, which is, you know, like, wow, time flies. And so watching people grow, I think is, again, I don't want to pretend to be older than I am, but I really do get a kick out of seeing people younger like surpass me in every way and really demonstrate how the country is producing so much talent, and that talent isn't static, it's dynamic. So it's great to see you grow and evolve as well. दो बातें हो गई, बिकॉज मैंने अब 2 अलग सवाल पूछते थे. पहले जो मैंने ये पूछना था कि फंडामेंटली हम जो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, पटवारी जी, आला, यूतिया, जो भी एक दूसरे को कहते हैं, आई एम मोर एंड मोर रियलाइजिंग दैट फंडामेंटली it's not a question of one person being jahil and the other person being smarter. It's that we're getting different information. We're literally getting different information and coming to the conclusions. हम जब एक दूसरे के conclusions देखते हैं, we're just like, आप यहाँ पहुंचे कैसे? What we don't realize is उसको reverse engineer करेंगे, उनको जो information मिली है उनसे उनको वहीं पहुंचना था. Is it truly, what would you say, 80%, 90% a matter of कि आप जो चैनल देख रहे हैं या आप जिनको फॉलो कर रहे हैं वो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, fundamentally the divide, the political divide that we see is a problem of bad information? Yeah, well, I think, you know, if we had to put a number on it, yeah, you could put 80%. I'd put maybe a little less, because mujhe lagta hai incentives also matter big time. And one is where you're getting your information, the other is where you're coming from. So in my own mind, you know, I come from, like, I don't really, but, you know, a part of me certainly comes from, you know, Farid Square in Federal Bay Area. And so that gives me a certain kind of chip on my shoulder about myself and how I view, you know, things around me. And that then helps inform where I get my information from, what channels and what sort of stocks of information I go and dip into. Right? So your selection biases in terms of where you're getting your information are coming from where you come from. And all of that over time gets shaped and curated by your incentives. You know, if you work at a bank and, you know, you have a good job and you're doing well and you come on Twitter, you know, maybe a couple of hours a day because you care about the country and you care about your surroundings, that's a very different vantage point to engage in politics from the one where maybe I come from, where I probably spend 5, 6, 7 times that amount trying to understand what's happening, because that's kind of how I you know, that's my life is to try and understand how the country works, how it doesn't work, how we can make it work better. So those are, you know, those are different incentives. And so my investment in a slow burn, badly flawed, very ugly, often corrupt and nepotistic federal democratic system, I'm invested in this. For the guy who's just dipping in and out of Twitter, it's like, of course he lifafe leta hai. Why would anybody be invested in this? And I understand that perspective, and so I don't mind. वो दिले गालियां, मतलब उसकी भड़ास निकल रही है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बजाय बीवी बच्चों पे निकालने के, वो आके अगर मतलब आप पे हमें निकाल लेता है, it's not a big deal as long as we have the mental health
kind of capacity to process that and to move on. Meanwhile, the reason I'm invested in it is because I'm kind of looking at a country as the sum of its parts, and there's 220 million parts. इतनी तो गिन भी नहीं सकता कोई यार, 220. और ये आ जाए, by the time the country turns 100, there's going to be 350 to 400 million Pakistanis, right? Gujranwala is going to have 10 million people. It just, if you think about the scale of what we're dealing with, of course it's going to be messy. And it's going to get messier. It's not going to get cleaner and nicer. So, the simple thing to say is that we should reach across the aisle where we should talk. But क्या जो आपकी एक fundamental thesis है, मैं बिल्कुल agree करता हूँ कि basic मसला पाकिस्तान में elitism, not in the way that woke people use it, but the idea कि जो elite capture है, वो narrative भी तो control करता है, और उनको लगता है कि उनको ही पता है सिर्फ पाकिस्तान के बारे में. When we see banners like either PTI या martial law, या when we see these statements like ये तो कीमे वाले नान पे वोट बेच देते हैं, इधर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी भी नहीं चाहिए. क्या वाकई एलीट को समझ नहीं आता कि पाकिस्तान किन मोस्ट ऑफ पाकिस्तान या एनीबडी हु डिसएग्रीज विद देम वो किन बेसिस पे वोट कर रहा है, या उनको वो एक कॉलोनियल माइंडसेट की है कि यार ये तो सैवेजेस हैं, हमें इनसे बेहतर पता है, इनके पास तो वोट करने का भी हक नहीं होना चाहिए, हम इनको बताएंगे कि गवर्नेंस कैसे होती है. Yeah, I mean, it's a little bit of both, but I think the biases exist on the other side as well, right? Like हम इनको elite कह रहे हैं, but यार खैबर पख्तूनख्वा में जो इंसाफी वोटर है वो elite किधर से है? And they really believe in. But most of them वो तो नहीं ऑनलाइन आके इस तरह की बातें करते हैं ना कि मार्शल लॉ लगाएं, क्योंकि उनके पास एक कॉन्शियसनेस है कि मार्शल लॉ लगेगा तो उनके साथ क्या होगा. Well, yes and no. I mean, we saw a flag burning, which I haven't seen before, and it could be Russian or Iranian information ops as well. We don't actually, we shouldn't believe everything we see. But I saw this flag burning guy, and he's he's a brother. US का flag? नहीं Pakistani flag. वो TikTok का एक वीडियो है, उसमें वो पश्तो में जो है बड़े गुस्से से फौज के बारे में और वो जो है पाकिस्तानी flag burn कर रहा है और PTI के colors हैं उसके बाद. The point is कि I think the way I try to look at it is I think I follow things really closely, and I try to talk to a lot of people, and I try to understand, and I try to travel within the country, and but because it's so large, even if I'm 100% updated on Pakistan in this moment, in 5 seconds Pakistan has changed. Maybe there's like 5,000 new kids that were born, and since we started speaking, right? Like the country is literally changing by the minute. It's constant. And so the chat में 2 लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उर्दू में बात करें. सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, बट आवाम की आवाज आप तक पहुंचाऊं. Fantastic. चलें, we'll stick to उर्दू. कासिम शफीक पूछ रहे हैं कि फॉरेन रेजिम चेंज प्रोपेगेंडा के बारे में आपका क्या ख्याल है. वो कासिम उसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, तो कासिम के व्यूज तो लोडेड सवाल पूछा कासिम आपने. नहीं, लेकिन सही बंदे से पूछा है. आई मीन इट्स नॉनसेंस. और मैं क्यों ये लोग माइंड करेंगे क्योंकि नॉनसेंस का जो ट्रांसलेशन है वो ज्यादा सख्त है. ये लेकिन इसको झूठ या बकवास कहने के अलावा मेरे पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत कम है. अब मैं इसको जल्दी से समझा दूं कि क्यों ये बकवास है. पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा शहजाद, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें एक मुकम्मल कांस्टेंट परमानेंट फीचर है, और एक मुल्क नहीं कर रहा. हर मुल्क इस मुल्क के पीछे पड़ा हुआ है. इसमें ये बात नहीं है कि ये मुल्क बहुत कोहिनूर है और सब आके इसको छीनना चाहते हैं, लेकिन है बड़ा दिलफरेब और दिलचस्प और बड़ी कशिश वाला मुल्क है. यहाँ पे 25 से 30% जो है आबादी शिया है. ठीक है. सो दिस कंट्री इज ऑफ इंटरेस्ट टू ईरान. ये मुल्क जो है ये पार्टीशन से पहले या इंडिपेंडेंस, मैं उसको इंडिपेंडेंस कहता हूँ, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया से कट के बनाया गया और उसके 2 हिस्से थे. फिर इसका अपना पार्टीशन हो गया. तो यहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो बड़ा गहरा और बहुत गहरा जख्म है इंडिया की कॉन्शियसनेस में. इंडिया नहीं भूलता पाकिस्तान के बारे में. हम जितना भी जो है हमें मतलब इंडिया से नहीं भुलाया जाता. अफगानिस्तान वाले जो भाई हैं, इवन जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो भी कहते हैं ये दुरन लाइन जो है वो बकवास है. अफगानिस्तान के भी इधर उस तरह के इंटरेस्ट है. चीन को हमारा डीप सी जो पोर्ट है वो चाहिए, वार्म वाटर एक्सेस चाहिए, क्योंकि उससे उसकी चीजें सस्ती हो जाती हैं और वो ज्यादा आसानी से कारोबार कर सकता है. ये मैं आपको मनफी इंटरेस्ट बता रहा हूं कि यानी कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए जो 4 ममालिक हैं इसके गिर्द, ये उनके इंटरेस्ट हैं. क्योंकि यहाँ पे ये इंटरेस्ट है. अगर ईरान यहाँ इंटरेस्टेड है तो सऊदी अरेबिया भी यहाँ इंटरेस्टेड है.
अगर चीन यहाँ इंटरेस्टेड है तो अमेरिका भी यहाँ इंटरेस्टेड है, अगर हिंदुस्तान यहाँ इंटरेस्टेड है तो रूस भी यहाँ इंटरेस्टेड. सो if you think about it, there's always a foreign conspiracy going on against Pakistani autonomy, against just whatever Pakistan wants. जो बेहतरीन चीज पाकिस्तान के लिए, उसके खिलाफ कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त, not everybody at the same time, but at any given point in time, जो भी फैसला पाकिस्तान करता है उससे कोई ना कोई दुनिया में नाराज हो रहा होता है. पाकिस्तानी सफारतकारी, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सियासतदानों का एक काम है on that front, और वो है कि उन चीजों को बैलेंस करना है. कभी चीन से ज्यादा ले लिया, अमेरिका को थोड़ा सा ठंड कराई, फिर जब चीन में थोड़ी ठंड हुई तो अमेरिका जाके गर्मी पैदा कर दी. अगर सऊदी अरब ठंड कराता है तो ईरान से जो है बातचीत, ये एंड दिस इज परफेक्टली लेजिटिमेट. इसमें कोई बेगैरती नहीं है, इसमें कोई दोगलापना नहीं है, इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है. द जॉब इज टू परस्यू द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. हाँ, इसमें एक कैवियाट है. कैवियाट ये कि ये जो नेगोशिएशन है सारी, ये हमारी अशराफिया करती है, और अक्सर हमारी अशराफिया अपना फायदा ज्यादा देखती है, अवाम का फायदा कम देखती है. लेकिन अवाम के बगैर अशराफिया अशराफिया नहीं रहती. सो ये कोई अगर कहे कि जी अशराफिया बिल्कुल ही जीरो और वन वाला जो फर्क है वो हो ही नहीं सकता. अशराफिया नीड्स टू कीप द अवाम at least at a minimum level of subsistence. And actually there's been enormous growth and enormous poverty reduction over the last 30 years. And it's not because, Nawaz Sharif is the best leader, or Imran Khan is the best leader, or Mosharraf is the best leader. It's because actually the country is big enough that no matter who's in charge, something's always happening, something's always churning. So no, there's no foreign conspiracy. And yes, America जो है वो शायद ना पसंद करता हो इमरान खान को, लेकिन कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को फोर्स कर सके किसी चीज पे भी. मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी. मेरी फिलॉसफी है कि हर मुल्क के खिलाफ साजिश करता है, और वही उन लोगों का काम है, सब करते हैं. वी शुडंट यूज दैट एज अ जवाब टू सप्रेस एंड अरेस्ट आवर ओन पीपल. बट हमने एक पूरी 2 घंटे की पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे की है. अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ लूँ, आपकी जो पुरानी बॉस है या कोलीग है, आई डोंट नो हाउ यूड लाइक टू फ्रेज दैट, उन्होंने सबसे खरी बात की, बट अनफॉर्चुनेटली हर किसी को पाकिस्तान में लगता है वो एक्सपर्ट है. हिना रब्बानी घर से पूछा गया, आई थिंक हामिद मीर के शो में, उन्होंने सीधी बात की कि मैंने इससे बदतर जबान नॉर्मल उसमें देखी है. इसी तरह डिप्लोमेट बात करते हैं. दिस इज नो मोर देन रूटीन. आई विल नॉट इवन स्पेंड 2 seconds ऑन इट. सिंस यू वर्क विद द फॉरेन ऑफिस, सिंस यू बिन इन देयर, अगर हम ये भी कहते हैं कि जी अनडिप्लोमेटिक जबान इस्तेमाल हुई थी, मान लिया, हमने मान लिया, एनएससी में कोई कंस्पिरेसी का जिक्र नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने खुद अपने आप को ही सोर्स बना के रॉयटर्स को बता दिया कंस्पिरेसी का कोई जिक्र नहीं है. एज समबडी हु वाज प्रॉब्ली प्रिवी टू दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कितना कॉमन है डिप्लोमेट्स के बीच में ऐसी जबान यूज करना जो शायद अगर एनएससी जैसी जगह में आए, इट माइट बी कंसिडर्ड अनडिप्लोमेटिक. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में काफी सख्त लैंग्वेज दोनों तरफ से इस्तेमाल होती रही है, क्योंकि कशीदगी जो है वो अफगानिस्तान में जो मामला था उसकी वजह से कांस्टेंट थी. अमेरिका मुसलसल कहता था ये करो ये करो ये करो, हम कहते थे ये करने से ये हो जाएगा, ये हम इस तरह नहीं कर सकते. फिर वो कहता था अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो हम कहेंगे, तो फिर हम कहते थे अच्छा ऐसी बात है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा. It's constant exchange of threats and so-called undiplomatic language. It's a negotiation, yaar. America wants things its way, Pakistan wants things its way. Two people are coming together and they're negotiating. So and by the way, that's what's continuing. अब जो stakes हैं वो थोड़े different हैं. जब अफगानिस्तान में अमेरिका था तो अमेरिका के stakes काफी high थे, तो in some ways the language was even sharper because the stakes were higher. अब stakes कम हो गए और थोड़ा सा उनका डिस्टेंस भी हो गया. तो नहीं, मेरा नहीं, हाँ, अमेरिका नहीं चाहता था कि हमारा वजीर आजम रूस जाए. और बाय द वे, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, बट आई सपोर्टेड द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू रशिया. I think Pakistan should absolutely shop all around the world for whatever little advantage it can squeeze. I think Khan Saab got played a little bit. I certainly wasn't expecting the attack on Ukraine to be launched that day. But even Khan Saab began to adjust. If you would have noticed, 4 or 5 days before being ushered out of office, he made a call or accepted a call from Zelensky. And there was a bit of a kind of walking back of that. वो जो गुस्सा था या जो एक तरफ जो लाइन उन्होंने ली हुई थी वो था.
आपकी राय थी कि बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हम किसी की कैंप में भी नहीं है मिलना. इवन इन माय ओपिनियन वंस वी हैड एक्सेप्टेड वी वर बिटवीन अ रॉक एंड द हार्ड प्लेस, एंड आई ऑनेस्टली थिंक जो स्टेटमेंट आई थी इट वाज परफेक्ट. जो उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी. जोश खिताबत में खान साहब ने थोड़ी ऐसी बातें कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, बट दैट्स ऑल पॉलिटिकल. अगर हम दूसरी साइड आर्ग्यू करें, डू यू फील लाइक the opponents are also overplaying what Imran Khan is doing, or is it या बाकी बहुत खतरनाक बात है कि इमरान खान ने हमारे डिप्लोमेट्स का जो रेगुलर काम है उसको इतना पोलिटिसाइज करके हमारे डिप्लोमेट्स का जो काम है अराउंड द वर्ल्ड थोड़ा मुश्किल बना दिया है. उनसे उनको वापस वक्त लगेगा वो पर्सनल रिलेशंस बनाने में, या डू यू फील लाइक ये बातें हैं या एक्चुअली डिप्लोमेट्स की जिंदगी में इस तरह नहीं होता? Shahzad, I think there's no overstating this. Once you publicize diplomatic cables, you permanently undermine and disable your diplomats from engaging in this kind of well, even यहाँ पे भी मैं और तुम जो बात कर रहे हैं जो live चल रहा है, मैं distract भी हो रहा हूँ इतने सारे. I didn't know how big your audience is. It's huge. All these comments. I'm trying not to follow them. सर आप आए तो इसलिए आए हैं. नहीं, it's no. You're phenomenal, mashallah. So Shahzad, the thing is that the ability to, so if we switched off the live thing, the way you and I would talk to each other, you know, we'd use a certain language, right? And we'd be less guarded. If then I found out that you secretly recorded that conversation and sent the audio to PK Politics and they put it online, would I ever talk to you that openly again? Nobody would ever come on my podcast ever again, probably. So the answer to your question that you cannot publicize diplomatic cables ever. You cannot use those things as a point of, you know, leverage. Anyway, Khan Saab has done a lot of things and he's gotten away with them. I think a lot of traditional thinking on politics and the way things should be, you know, I'm very old-fashioned, frankly, as are probably you. The digital age populist doesn't care for all these rules. यही ट्रंप ने किया, यही ब्रेक्सिट में हमने देखा होते हुए, यही बोल्सोनारो करके चला गया, फिलीपींस में यही हो रहा है, विक्टर ऑर्बैन यही कर रहा है हंगरी में. I think Marine Le Pen is in a real position of potential advantage. I mean, I can't believe how close the first round was in France. So ये सारी चीजें पूरी दुनिया में हो रही हैं. Technology has really changed how we interact with big picture ideas and issues. We even had Michael Kugelman on. उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था कि जब आप बात करते हैं डिप्लोमेट्स में क्या रिएक्शन होता है. He said we do see it as campaign statements, a lot of it. कि ठीक है कैंपेन में उसमें बात हो गई, but even with that you would say कि जो डोनाल्ड लू को specifically target किया गया है, this will for sure undermine our diplomatic relations. It will undermine the ability of other countries' diplomats to speak freely with Pakistani diplomats. Which lowers your net capacity for information and in intelligence gathering, which is one of the primary things. Diplomat क्या करता है, दूसरे मुल्क में जाता है और वापस तार लिखता है, कहता है भैया यहाँ पे तो यहाँ पे बिजनेस की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आम और मैट्रेस बेचना शुरू कर दो. या वो जाता है और कहते हैं यार इनके पास जो ये गोलियां ये बना रहे हैं, इससे एक गोली चलाते हो 5 अगले मर जाते हैं, इनसे हम वेपन्स प्रोक्योर कर लेते हैं. या वो कहता है ये लोग आईएमएफ पे बड़े तगड़े हैं और इनकी वजह से 5 वोट हमें यूएन पे भी मिला करेंगे और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे भी, इनसे दोस्ती कर लेते हैं. यही होगा ना. तो वो जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसके लिए लोगों से बात करनी पड़ती है और उसमें 3-4 लोगों से आप बात करते हैं. आप सिफारतकारों से बात करते हैं, आप सियासतदानों से बात करते हैं, आप मीडिया वालों से बात करते हैं, सिविल सोसाइटी से बात करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं. when you leak a cable like this, you undermine all of those capacities. अगेन पॉलिटिक्स कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप और मैं एग्री करेंगे, राइट. जो खान साहब यूएस के बारे में बातें कह रहे हैं, शायद आप और मैं कैमरा ऑफ करके बात करें तो हम वही सेम बातें करें, बट शुड प्राइम मिनिस्टर बी सेइंग दैट नो. तो रिजीम चेंज वी नो प्रोपेगेंडा है. जिन्होंने सवाल पूछा था उन्होंने बाद में कहा भी कि आप ही का कॉलम पढ़ा था मैंने, इसलिए उसको प्रोपेगेंडा कहा था. और साजिश के एक सेंट्रल किरदार उजैर यूनुस भी चैट में उसको फॉरेन साजिश कह रहे हैं. सवाल मेरा ये है कि ठीक है हमने मान लिया फॉरेन साजिश तो नहीं है, बिल्कुल हमने मान लिया, तस्दीक कर लिया, हमने ये भी तस्दीक कर लिया कि सेम पेज नवंबर में फटा था. ऑल दैट बीइंग सेड, is it not also an important factor for our establishment कि यूएस के साथ अगर रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय होंगे तो
मुल्क की भी फंडिंग, इदारे की भी फंडिंग, और जनरल एक्सचेंज और आर्म्स एंड एम्यूनेशन, वो सारे जो रास्ते और पाइपलाइंस हैं जिससे हिस्टोरिकली पाकिस्तान और हमारे इदारे उन्होंने प्रॉस्पर किया है जितना प्रॉस्पर किया है, इमरान खान डिड पुट ऑल दोज एट रिस्क. सो is there any credence to this idea that the establishment did want Imran Khan out because of this? No, I think the establishment, Imran Khan, and actually, I wouldn't say the establishment Imran Khan. I mean, YouTube है तो यहाँ पे तो खुल के बात कर सकते हैं ना. बिस्मिल्लाह. फैजियाब जो आपके इरादे हैं वो हम उनको फैजियाब करने के लिए पॉडकास्ट. नहीं, आई थिंक कि ये आर्मी चीफ का और खान साहब का जो है फड्डा हुआ है DGI की नोटिफिकेशन. That's the exchange, right? That's the contest. That's the big disagreement. अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो frankly broadly ठीक चल रहे थे in the sense that Dr. Moeed Yusuf and Jake Sullivan enjoy a really good relationship. Asad Majid had done a pretty capable job as a diplomat. The US had been, I think, hurt and wounded by the way in which Kabul fell, but they appreciated the way that Pakistan supported the Doha peace process. They appreciated the evacuation of Westerners and American citizens, in which Pakistan played, I think, the most essential role. So there was no kind of burning sort of rage either in Washington or in Pakistan. And in terms of rescuing the relationship, I think there's a point at which the rhetoric will overtake reality, but we haven't crossed that point. So that's my way of saying the relationship is not beyond rescue. And even if Imran Khan was supposed, let's say he wins an election and comes back, I think it can still be rescued. However, if his election campaign is anti-Western, then there's no coming back for him. You can't run an election on one platform and then come into power and flip the switch entirely. Even if he wanted to be pro-Western after he wins an election by being anti-Western, I think it'll become really problematic for him. तो आप कह रहे हैं कि वो एंटी वेस्टर्न अगर कैंपेन रन करें तो वो पावर में नहीं आ सकते. आप कह रहे हैं वोट से नहीं आ सकते, मैं कह रहा हूं पावर दैट भी उनको आने नहीं देंगे. नहीं, मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं. If you have a free and fair election and he wins an election and he comes into power, he can go either pro-West or neutral or anti-West, depending on the kind of election campaign he runs. If he runs an election campaign in which his entire platform is anti-West or anti-US, and then he becomes prime minister, his flexibility to change his mind then will be constrained by the fact that he won the election on the basis of selling people an anti-West agenda. So once you sell people an anti-West agenda, you can't then come into power and flip the switch entirely. मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ. बट लॉजिक तो अक्सर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं मिलता, बट वो बातें तो वही कर सकते हैं. जिस तरह इस हुकूमत में भी उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की, वेस्ट को भी मॉन्स्टर बनाया, पर इनकी हुकूमत में चाइना गॉट एंगर्ड बिकॉज हमने IMF को डॉक्यूमेंट दिखाया, हम IMF के पास भी गए. स्टेट बैंक ऑटोनॉमी पे मल्टीपल राय हो सकती है. मेरी पर्सनल राय ये कि गलत था. रिगार्डलेस गलत था सही था, उस पर डिबेट. Did the IMF want that? Absolutely. Did we oblige the IMF by making the state bank autonomous? Absolutely we did. तो वो जो चाहते थे वो तो हमने सब किया. बाकी बयानबाजी अगर चल रही थी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? I think अगर बयानबाजी, it matters on both sides of the spectrum. It's very difficult for, let's say, Joe Biden to champion Pakistan's cause when he goes to Congress, because in Congress they pick up the paper and they say shackles of slavery, Osama bin Laden Shaheed. What are you talking about? No, we don't want to help Pakistan. We're not going to send them a new block F-16. We're not going to sell them F-35s. Look at how they're talking about us. And the opposite also applies here. If there's enough negativity about Pakistan in the West, that gets cited and gets baked in over here. So I think public discourse, this is what I'm saying. I think the big change in the last 10, 15 years and how the world works is that the chatter in the drawing room or the chatter on Twitter or the chatter on Facebook actually shapes policy, which we often think it doesn't. So that guy, वो जो banker भाई है जो आके Twitter पे जो है वो मतलब जो 2-3 जुमले कस रहा है, that person is helping shape the overall policy environment. It's a very small contribution, but if you multiply that by 100 or 1,000 or 10,000 or 100,000, it starts to add up.
ये कोई जनरल बैंकर भाई हैं या वो जो एक स्पेसिफिक एब्सकॉन्डर बैंकर भाई हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, I was just generic. I just like picking on bankers. ये हमारे रेगुलर लिस्टनर शहरी एजाज, क्योंकि आपने बात की कि चीजें बदल रही हैं, वो ये भी पूछ रहे हैं कि जो एक पॉपुलिज्म का हमने एक वेव्स देखी हैं, फार राइट पॉपुलिज्म काफी पॉपुलर रहा है, whether that be Trump, whether that be Modi and shades of that in Imran Khan and the youth brigade as well. क्या आप देख रहे हैं कि वो पॉपुलिज्म अब थोड़ा ठंडा होगा और जो एक एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल पॉलिटिक्स है, नॉट दैट वो कभी पाकिस्तान में गई थी, बट वो ज्यादा होगी और पॉपुलिज्म इतना ज्यादा नहीं होगा इन द नियर फ्यूचर? No, I think populism is going to increase, not decrease. I think what we've learned. Go जी ahead. जी जी, नहीं, मैं अगले सवाल पे आ रहा था। लोग इतनी तेजी भेज रहे हैं, मुझे पढ़े भी नहीं जा रहे, प्लीज कंप्लीट करें आंसर। I think the question is, what kind of connectivity does that populism have? My own guess is, and again, with a lot of humility, there is a certain kind of Pakistani voter that is really excited by this narrative because it really makes sense to them, because they live it. But there's a lot of Pakistani voters that have no connectivity with this kind of anti-West or foreign conspiracy narrative. And so just because there's 100,000 people on the street in a city is not reflective necessarily of a 2/3 majority coming Khan Saab's way. People like to make citations. लोगों को लगता है कि यार देखो इजिप्ट में नहीं हुआ था। इजिप्ट की मेरे ख्याल 85% आबादी शहरी है और कॉप्टिक क्रिश्चियंस के अलावा सब मिस्री हैं। Not to take anything away, Misri diversity in its own right, ideological diversity बहुत है, Salafis हैं, बाकी हैं, मतलब there's a lot of stuff happening in Egypt, but in terms of comparing it to what's happening in Pakistan, there's no comparison. Every 15-20 kilometers in the Punjab, you enter a new country, yaar. मसालों का मतलब खाने की स्मेल जो है वो एक ही डिश की स्मेल जो है वो बदल जाती है, जो है वो लैंग्वेज का जो एक्सेंट है वो बदल जाता है। और ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, which is kind of this big flat land where everybody's supposed to be the same. Nobody's the same. So the point is that when you have a country as diverse as this, the effectiveness of populism is about where I think Khan Saab is right now. He is a viable candidate for between 15 and 40% of the vote bank. The only way it's 40% is if there's like everything aligns perfectly, including Rawalpindi, in terms of how excited people are. I agree with the food thing. आप लाहौर के करीब आए और अच्छी बिरयानी मिलना बंद हो जाती है। सिंस आपने लास्ट टाइम फुटबॉल एनालॉजी ओल्ड ट्रैफर्ड की दी थी, मैं आपको फुटबॉल एनालॉजी से ही सवाल पूछ लेता हूँ, इसी आपके जवाब को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, कि होम एंड अवे अगर टीम है, वो भले कभी ना कभी आप दूसरे के ग्राउंड में जाके उनको हरा दें, बट होम एडवांटेज हमेशा उनके पास ही होगा। तो खान साहब ने जो रिलीजियस पॉपुलिज्म अपना लिया है, डू यू फील लाइक कि वो जितना भी अपना लें, जितनी भी बातें कर लें, ये होम टर्फ रिलीजियस पार्टीज का ही है, और कल को टीएलपी आके वही नारे मारती है, उनकी जो इफेक्टिवनेस होगी, वो खान साहब जो भी कर लें, वो कभी वो होम ग्राउंड एडवांटेज उनको मिल नहीं सकेगा, बिकॉज वो उनकी टर्फ नहीं है। So I wrote about this, and in fact, I just dug it out for somebody else. I wrote about this, and I said how PM Khan and PTI win 2023. ये मैंने सितंबर में लिखा था, पिछले सितंबर में। तो उसमें मैंने कहा था that he's making 5 bets, and one of his bets is that right-leaning populism is a more certain political bargain than progressive realism. The question, तुम्हारा जो सवाल है कि क्या वो successfully ये कर सकते हैं या नहीं, I think इस पे मैं काफी सोच रहा हूँ कि टीएलपी का क्या रोल होगा हमारे अगले इलेक्शन में। और मुझे ये लगता है कि एक जो फैंटेसी होगी खान साहब की, जो पूरी होती है या नहीं ये टाइम बताएगा, वो ये है कि इनकी कोई इलेक्टोरल एडजस्टमेंट टीएलपी के साथ हो जाए। अगर ये हो जाती है तो फिर ये राइट विंग वोट का प्रॉब्ली 60-70% जो है पंजाब में इन पर्टिकुलर वो स्टिच अप कर लेंगे। केपी में उनको राइट विंग वोट की फिक्र नहीं है, क्योंकि बिटवीन द पीटीआईज वेरी स्ट्रॉन्ग रूट्स इन केपी एंड हिज तालिबान वाला जो नैरेटिव है, व्हिच इज दैट उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, अफगानिस्तान में नहीं जाना चाहिए था। Plenty of right wingers in KP, even if they hold their nose, will go and vote for PTI. So
there he doesn't need JUIF or Jamaat Islami. And this is one of the great failures of the Jamaat, is that they haven't been able to figure out. उसने एक वो wrestling move होती है ना, खान साहब ने केपी में जमात इस्लामी को like sleeper hold में डाल दिया, because सारा उनका narrative उसने adopt कर लिया है, और सारी energy जो है उसने जो है उसके साथ energize कर दिया even जमात के voter को. So right wing, I think he has it stitched up in KP. He's never going to get the JUIF vote, but the JUIF vote is not going to win the entire province in any case. वो South KP में एक force है और वहाँ पे शायद वो थोड़ा suffer करें, but he's going to win the KP. So the real question is religious vote in the Punjab, and I think without getting on side with the TLP, it'll be hard for him to dominate that. लास्ट टाइम हमने एमक्यूएम के भी कॉन्टेक्स्ट में यही बातें की थी कि इधर और कभी भी नहीं होता, एक चीज नहीं होती. टीएलपी अगेन मेरे खदशात तो हैं कि कहाँ से उनको भी सपोर्ट भी मिलता है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज़ वक्त भी कम है. ज्यादा सवाल ये है कि अगर हम we don't know who interferes in what elections, but अगर हम we try and put ourselves in the shoes of the establishment, उनके लिए बेहतर नहीं है. वैसे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, सब आए बैठे बात करें, but from the establishment's perspective, giving people a thin majority to keep them in check, isn't that great for them as well कि दोनों sides खेलें? Yeah, I mean, I think the degree of control that the establishment has on who wins and who doesn't, I think they have a marginal effect on it. So 2018 mein, in my estimate, probably between 20 and 25 seats, tip the balance. Now that can change the outcome of an election, but it can't, they can't make a party that's only going to win 25 seats. They can't make that party win 100 seats. They can convert a party that was going to win 75 seats into a party that wins 100 and, so on and so forth. I think the real magic sort of bullet that they've always enjoyed are independence in Sindh and the Punjab, especially South Punjab, because those people are up for they're up for grabs, right? The day after the election. If it's close, those people have enormous power. And who they join ends up deciding who's going to be in government. And then when they decide to leave, we saw what happened. So it's that easy to take down a government that's dependent. I don't know, agar isse aapka jo sawal hai wo उसका जवाब मैं दे रहा हूँ या नहीं. अली आफ्ताब सईद ने बहुत अच्छी बात की थी 2013 के इलेक्शन में कि इमरान खान जो 35 पंक्चर कहते रहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि 35 पंक्चर से ज्यादा कोई ला ही नहीं सकता. अगर कोई इतनी पार्टी है कि उसको 35 से भी ज्यादा पंक्चर चाहिए तो वो पावर में आ भी नहीं सकता. लायन मैन पूछ रहे हैं, कैन द टीएलपी बिकम अ डोमिनेंट पॉलिटिकल प्लेयर दिस इलेक्शन? You have a lot of Indian friends that are listening in, which is fantastic. So मैं इसका जो हवाला देता हूँ, और ये मैं पाकिस्तानियों को डराने के लिए देता हूँ, लेकिन ये मैं फेक डर नहीं है, ये जेन्युइन डर है मेरा. बीजेपी ने early 90s में एक इलेक्शन हुआ था, can't remember whether it was 91 or 92. They won 3 seats in the Lok Sabha. And then in 1997, they made a coalition government. 5 or 6 years में, they went from 3 seats to I don't know how many hundred. The difference is the RSS has 150-year-old history. They've been working on this project for, 3-4 generations. TLP is relatively fresh, but it is not inorganic. There's a Barelvi rage that comes, I think, in part from the post 9/11 narrative about the Barelvis being soft. Part of this, from an ideological perspective, is that they want to prove that they're not soft. And part of it is that so much of Barelvism historically, this kind of Sufi-leaning tradition, is the need and the requirement of the poor and the underserved. वो जो linear सख्त वाला इस्लाम है, वो middle class वालों का होता है. वो पढ़े लिखी families जो बाहर चली जाती हैं, वो फिर नमाज रोजा और वो हिजाब और वो सारा. And I'm one of them, right? Like I come from a family where we migrated from India to Pakistan and then from Pakistan abroad. And, when my family moved back, we were kind of Orthodox Muslims. And that doesn't happen in the village. In the Pakistani village, they still go to the shrine, right? So you could be from a Barelvi family, but if you've, come to, you've come to life through the Middle East or through the West, through the UK or North America, you get more linear about religion. So the Barelvis are the non-linear. So unke liye
ये जो रसूल पाक का जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो है स्टैचर है, वो इज मोर देन लाइफ इटसेल्फ। अब वो हर मुसलमान के लिए है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में वो कितना आगे जाते हैं या कितना वो उसको वो करते हैं, उसको फिर दैट्स बीन टैप्ड इनटू एंड आई थिंक एक्सप्लॉइटेड बाय दिस फोर्स। सो इट इज नॉट इनऑर्गेनिक, and the answer to the question is, do we see the TLP in power? If they can organize and mobilize in the way that the RSS has in India, then a version of the TLP, something like the BJP within the next decade, I think is very possible. I think TLP, अगर हम सिर्फ नैरेटिव पे बात करें, I think TLP has a checkmate on the Pakistan narrative. अगर वो कहते हैं कि भाई हमारा फंडामेंटल इस्लाम है और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है, how can you deny it, right? If they say we stand for the love of the Prophet and you're a Muslim, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते उनके नैरेटिव को। तो उनकी एक्चुअली एक ऑर्गेनिक वोट, नॉट जस्ट इन सर्कल्स दैट यू अज्यूम, अर्बन सेंटर्स में, हमारे सर्कल्स में, दोस्त वो उनका वोट है। वोट छोड़ो यार शहजाद, if somebody when I grew up in the West and the Satanic Verses came out when I was a kid, I wept with tears. Like as a child, I felt so profoundly violated by blasphemy. Forget about TLP. I'm not a TLP supporter. I'm telling you, the honor of the Prophet is really sacrosanct, even for a run-of-the-mill kind of, like it doesn't matter how educated you are, how liberal you are. Love for the Prophet is non-negotiable. So in terms of what the TLP is bringing to the table, there's 0% of Pakistanis who are going to be like, ये जो है ना, ये जो बुनियादी बातें गलत कर रहे हैं, ये कोई नहीं कहेगा। वो कहेंगे इसका जो बात कर रहे हैं उसके बाद जो ये कहते हैं वो ठीक नहीं है, हमें लीगल रहना चाहिए, हमें प्यार से बात करनी चाहिए लोगों को। वो सारे आर्ग्यूमेंट अपनी जगह हैं, लेकिन उनका जो मफरूजा है उस पर there's no debate. So it's very, very powerful. बहुत ज्यादा कंटेंशंस आ रहे हैं आरएसएस और टीएलपी कंपैरिजन को। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, मे बी वी कैन आस्क हिम टू कम अगेन एंड हैव अ लॉन्गर डिस्कशन ऑन दैट। तो हम उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। आपको मेरी पॉलिटिक्स तो पता ही है, मैं बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ, मुझे लगता है उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। बट जो अभी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, देन इवन व्हेन वी लुक एट हिस्ट्री एंड एज यू एज समबडी आई सी एज अ रियलिस्ट, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि थोड़ा रोल तो फिर अच्छा भी है। अगर कुछ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे पास्ट में, या खान साहब अपने आप को एक अर्दोगान समझते थे, दैट मिलिट्री सिविलियन पॉपुलिस्ट लीडर कंबाइनिंग द टू, तो एक गेट कीप उस आइडिया को करना एक इंस्टीट्यूशन का, व्हाट वुड यू से टू द आइडिया कि मे बी इट्स नॉट सच अ बैड थिंग कि वो एक गेट कीपर्स हैं हमारे पास? Well, I don't look at sort of the assumptions here. By the way, I think Saurabh said my family's migrated from Lucknow. I'm from half from Gulauti, and half from Bulandshahr. My father's family is from near Bulandshahr. It's a village called Santa. And my mother's family was originally from Gulauti, and she was based in Aligarh until the 70s. Until 1970s. आपको बुलाकर ना हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। आपने लास्ट टाइम भी टीजर दिया था कि बड़ी कलरफुल आपकी फैमिली हिस्ट्री है। एक सिर्फ आपकी फैमिली हिस्ट्री पे भी पॉडकास्ट होना चाहिए। We'll do that too. On the कि गेटकीपर होना चाहिए नहीं, गेटकीपर होना चाहिए या नहीं तो ख्यालों वाली बात है ना, कि भाई मुझे मतलब ये चाहिए या नहीं, एज इफ के हम रेस्टोरेंट में हैं और हमें मेन्यू दिया जा रहा है और हम चूज कर रहे हैं। हम रेस्टोरेंट पे नहीं है, हमारी चॉइस। हम जेल में हैं। जेल के कैफेटेरिया में चॉइस नहीं होती, यू ईट व्हाट यूर सर्व्ड। सो आई थिंक, अच्छा ये मैंने in a lighter vein बोला, but there is now I think an emergent kind of setting in or baking in of the security sector as being a significant political stakeholder. Should it be that way? Absolutely not. But is it that way right now, and is it going to stay that way? It absolutely will. So, that's kind of where I'm at on this. I don't think it's a choice. I think what we have to do, if we are invested in pluralism, if we're invested in democracy, if we're invested in getting along, if we're excited by the fact that Mohsin Dawar or Shahbaz Sharif tweets exchange kar rahe hain, which for me, I'm beyond excited, right? Not because मुझे Mohsin Dawar का narrative अच्छा लगता है या शहबाज शरीफ का, लेकिन it's so weird कि एक लाहौरी business family का सियासतदान और एक वजीरिस्तान का नौजवान सियासतदान, जिनके narratives बिल्कुल फर्क हैं,
वो एक दूसरे से मिल रहे हैं यार. What could be more beautiful, right? Like people from diverse backgrounds coming together. And it's our system that affords us that. And it's the federal system that affords us that. So if you're invested in all of this, then the thing you have to do with respect to your question is that you have to work with the security sector, build so much trust and confidence, and integrate within the security sector this appreciation for diversity. And the fact that when you say left right, log left right nahi karenge, right left karenge, and that's okay. It's okay कि आपके जो narrative है उससे बिल्कुल उलट अगला बात कर रहा होगा और फिर भी वो अपना भाई है, अपनी बहन. आई नो हमारे पास लिमिटेड टाइम है. अब लोगों से मैंने पूछा था सारे सवाल भेज दें, बट मैं सेल्फिश हो रहा हूँ. मेरा एक और सवाल है आपका और मेरा. शायद मेरी जबान कभी भी तल्ख हो जाती है, बट आई फील लाइक फंडामेंटली हम दोनों ने हमारा जीना मरना पाकिस्तान में कर दिया है. तो वी डोंट हैव अ चॉइस बट टू बी होपफुल. अगर हमने यहाँ रहना है तो हमने होना होपफुल ये जिंदा रहने के लिए. बट सिर्फ होप हटा के प्रैग्मेटिकली डू जेन्युइनली फील होपफुल कि ये जो एक कोएलिशन बनी है, whether they stay in power, whether they come in power, that's maybe irrelevant, but they've learned the lessons of the past. Are you hopeful that they've learned the lesson of the past and they'll be better leaders and better people and better human beings? Beyond just hope. The first few weeks of any new government, they always have great memories about the recent past and they've learned their lessons. You sit in a chair of extreme and absolute, almost absolute power long enough, and you forget all those lessons. Imran Khan and the one page lasted for several months, even after significant disagreements with Rawalpindi. But once you stayed in that chair long enough, you forgot what got you there, and you got into a tiff. So I think there has been lesson learning, and I think with the Sharifs, it's been really impressive and consistent on federalism. It is not their nature to be this open and embracing of diversity, right? Like that's not where they come from. They come from a very central urban Punjab kind of, we are Pakistan, we know the answers. But that was like in the 90s. If you look at the Sharifs over the last 15 years, I mean, along with President Zardari, Nawaz Sharif has helped stitch together the Pakistani Federation. As much as that offends people that hate Nawaz Sharif, I think he's played a very significant role in the federal character of Pakistan. ये हाउ टू किचन का सवाल मुझे तो नहीं बिल्कुल पसंद आया. नो होना चाहिए इसका जवाब, लेकिन क्योंकि ये 1 घंटे से सुन रहे हैं या सुन रही हैं और इन्होंने बोला था ये सिर्फ मुशर्रफ ज़ैदी के लिए यहाँ पर आई हैं या आए हैं. इज टेक्नोक्रेसी बेटर फॉर पाकिस्तान देन डेमोक्रेसी? माय आंसर इज नो. Yeah, same here. It's absolutely not. There should be more people that are qualified and they should be engaged in decision making. And there shouldn't just be one technocrat in one ministry. There should be 5 or 6. Pakistan has a lot of talent. And so they should be used, they should be engaged, they should be heard. But the decision-making of Pakistan needs to be what comes from the people that are voted into power. Will the military establishment introduce a new experiment or stay within 3 current choices? I mean, the country's not a lab. So even those experiments or those selections, whether it was Bhutto Saab or it was Nawaz Sharif or it was Imran Khan, they had their own weight, and the military kind of invested in that weight. So if there's a politician that comes along that has substantial weight, I'm sure that the military will engage with that. But the military can't just manufacture things out of thin air, is what I'm saying. And that relates to the point I was making about the TLP. The TLP is a very real and very organic thing. Usko, फिर, उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा फर्टिलाइजर जरूर डाला जाता है, लेकिन वो जो पौधा है, वो जो उसकी जो पैदाइश है, वो जमीन से, जो उसकी जड़ें जो है जमीन में ही है. भुट्टो साहब की भी थी, नवाज शरीफ की भी थी, खान साहब की भी थी. कोई शब्बीर चौधरी हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि पाकिस्तान में सिविल वॉर आ रही है. तो कोई पूछ रहे हैं जॉनी जी के पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाली है. बियॉन्ड इवन होप, आई थिंक देयर इज जीरो चांस, बट व्हाट्स योर टेक? पाकिस्तान में कोई सिविल वॉर नहीं होने वाली. That's completely my take as well. How do you see the Sharif government? Well, I'm a big Shahbaz Sharif fan. I've never made a secret of it. Prove हो गया ना पटवारी सर, prove हो गया अब तो. Hey, I mean, it is what it is. I mean, I'm also a big fan of what Imran Khan, brings to the table. उसने कितनी चीजें खराब की, कितनी बेहतर की, वो एक अलग debate है. Anybody that wins Pakistani votes
and and puts in a real effort to serve the Pakistani people, I'm excited about. No one's done that in the way that Shahbaz Sharif has done it. Does he have flaws? Of course he does. Who doesn't? But in terms of consistent, sustained, high endurance, delivery focused political performance, there's only one Shahbaz Sharif. Shamir Javed पूछ रहे हैं, will the establishment realize what Mosharraf just said about staying in the same chair for too long messes up with things, about extensions as well, and make a decision on it? I personally think extensions should be made illegal, but what's your take, sir? I hope they are made illegal. I think it's damaged the national security infrastructure of Pakistan immensely to have 3 of the last 4 army chiefs seek and find service extensions. It undermines the rotational aspect of professional military. And we do have the best and the most professional military. So the fact that it is deprofessionalized in this way is deeply damaging for Pakistan's national security interests. Can the new government take unpopular decisions like petrol subsidy revocation under the political pressure from Imran? This will deplete Pakistan of highly valuable dollars in the long run. Nitish Singhal, आप बैन इसलिए हुए थे क्योंकि आप स्पैम कर रहे थे जी. In my column today, जो आज आया है, उसमें मैंने कहा है कि it would be irresponsible for Pakistan's newly installed or newly elected government or newly in government to it would be irresponsible not to raise petrol prices. So my view is they absolutely have to. I think they're going to try and delay it based on what I've heard so far from Miftah Ismail. And I think Imran Khan has hamstrung them. वो कम करके और 3-4 हफ्ते कम करके उन्होंने इसलिए की थी कि जब अगली गवर्नमेंट आए उनको डायरेक्टली 25 रुपए बढ़ानी पड़े. And then it's a very great popular slogan कि ये देखें आते ही इन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिए. Yeah, I mean, I think we're lucky that oil went down, I think, the last couple of days. So it's now down to $90 a barrel. So that's probably what allows them to delay the raising of the price, but they're going to have to raise it. I wish I had thought of this question. This is the best question we actually received in the chat. Hasab पूछ रहे हैं, how do you see Bilawal as a possible foreign minister? अच्छा सवाल है. I think it'll be an interesting experiment. I don't see that happening in this cabinet just because Bilawal is the chairperson of his party. And for him to serve under the leader of another party might be, from a protocol perspective, unko shayad itna wo bhai na, wo wala sauda. I think it'll be an interesting experiment. I think there are people that are more qualified, even within the PPP, including Hina Rabbani Khar. कोई पूछ रहे हैं, do you see the army bringing up Mosharraf? Very clear answer to that is no. Should we just say no and move on? Yes. Does he see RSS and BJP in Pakistan and PRC national interest since he's weakening the Indian economy? ये बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे समझ में भी नहीं आया. Yeah, I didn't understand it either. So does he see RSS and BJP in Pakistan and PRC national interest since he is weakening the Indian economy? अजीब phrasing है सर सवाल की. Do you believe? Yeah, I don't want to. जी. I don't want to speculate on what that means. Do you believe that the newly elected government has a roadmap and competence to address the debilitating economy? Yes, they do, sir. Aapki opinion? Yeah, absolutely. Part of that I didn't like. Yesterday, they raised government salaries and I think pensions as well. Minimum wage 25,000. Isn't that a great thing all over Pakistan? That's it. That's separate. So that's great because that private sector has to do and private sector should. And in fact, in my own company, just today, we sort of, everyone is at that level now, minimum, right? Alhamdulillah. So that's great, and everybody should do it. The problem is the pensions and the public sector employees, because there's better ways to. अब तो उठना भी तो उनको 7 बजे पड़ रहा है. शुरू भी तो काम 8 बजे कर दिया, सैटरडे को भी जॉब दे दी, अब उनको पैसे भी ना दें. चलो. Miftah, what do you think of Miftah as foreign minister? Candyman कहा जा रहा है Miftah को. I guess Kokomo. Yeah, I mean, I think again, because I like him personally. I don't think I can have an objective view. I'm really fond of him as a person. His performance as finance minister, the last time around, I think he was in a tough spot. Pakistan got grey listed while he was. Or rather, was not able to come out of the grey list while he was minister.
I think they had to devalue the rupee a little bit while he was foreign minister, and they had to make up for some of the mess that Dar left behind. But a mess that was a good mess in the sense that Pakistan grew because of that. So I don't know how he's going to manage. Again, I don't think he has a long enough runway. 5 साल के लिए नहीं आए, right? Maximum 4-5-6 महीने, बहुत अगर हुआ तो 12-13 महीने जो है ये लोग आए. So it'll be interesting, but he has to be a firefighter. तो देखते हैं कि वो कर लेते हैं या नहीं. Will Pak-India relations change? I will actually give Pakistan a lot of credit. हमने बहुत maturity दिखाई है. अगर हमारी मिसाइल गलती से इंडिया में चली जाती तो आपका मीडिया और आपका मुल्क क्या करता है इंडिया, तो we all know. But will Pak-India relationships change? I think so. I was talking to an Indian friend of mine on Twitter the other day. मैं तुम्हें उसका link भी भेजूंगा. You can maybe post it in the comments as well to see what I think, because I think I've probably framed it better than I will right now. पाकिस्तान इंडिया की हुकूमतें एक दूसरे से अब बात नहीं कर सकती जिस तरह उनको करना जरूरी है, और उसकी वजह जो है वो कश्मीर में जो हुआ है आर्टिकल 370 और ये सारा जो अगस्त 5 को हुआ था. लेकिन अब हालात बेहतर करने के लिए जो नॉन स्टेट एंगेजमेंट है, कल्चरल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बिजनेस हो गया, इन चीजों को थोड़ा सा बढ़ाना होगा. मैं इंडियंस के कमेंट्स देखता हूं और मैं कहता हूं यार ये बिल्कुल हमें नहीं जानते, और फिर आई एम श्योर वो लोग हमारी कमेंट्री देखते हैं और वो सोचते हैं यार ये कौन सी इंडिया की बात कर. In fact, there's a little bit of that, right? He doesn't know Indian history. And I'll admit, यार मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं इधर रहता हूँ, मेरे सारे इंटरेस्ट यहाँ पे हैं, 3 दफा हमारी जंग हो चुकी है, कश्मीर में तुम लोग बुरा हाल कर रहे हो. मैं at some level maybe I don't even want to know anything about you. I just want you to stop messing with Kashmir as a Pakistani, right? And I'm sure there's over there वो कहते हैं यार आतंकवादी आप बेचते हो और फिर कहते हो कि ट्रेड करना है. You know वो उनके narrative जो है वो अपने. Until people don't get to know each other a little bit better, expecting that the state back channel के through secretly जो है दोस्ती कर लेंगे और कश्मीर जो है वो magically हल हो जाएगा, नहीं होगा. So I think we have to take a different approach, more track 2, more cultural, sports exchange, more business, more of that kind of thing, until we don't get to know each other better. And then once we do, then the governments will find it easier to get along. Do you think that we should give immunity to PM and CMs during their time in government? मुर्तजा सिकंदर ने 50 दफा ये सवाल पूछ लिया. No. Why should they be above the law? I think it's ridiculous. I think maybe where that question is coming from is कि इनके खिलाफ जो है cases हैं, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और इन सब के खिलाफ भी cases थे. In fact वो anti-terrorism वाले cases थे और ये लोग bail पे थे. It shouldn't be so easy to register cases against people. And once a case is registered, they shouldn't last for so long. Judgments should be made much quicker. तरीके इंसाफ का मतलब ये था कि इंसाफ पे ये लोग काम करते और थोड़े से रिफॉर्म्स लेके आते. कोशिश इन्होंने की है, nowhere nearly enough. So a lot of the questions that a lot of PTI people have were supposed to be answered by the PTI. मुझे पता है कि आपको कल आपकी फ्लाइट है एंड अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. सेफ ट्रैवल्स टू यू एंड योर फैमिली. मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा. तो इसलिए मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ. सर लास्ट टाइम आपने कहा था इमरान खान वुड मेक अ ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट नाउ? Yeah, I think he's chosen a pathway, Shahzad, that is decidedly in a different direction. And I guess I would say कि मेरा software update मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. I really want to understand how this new world works, in which this guy can basically pit himself against everyone. Imran Khan is the only option for Pakistan. The Supreme Court, is corrupt. The army is corrupt. All the politicians, all the political parties other than the PTI are corrupt. It's only Imran Khan that's the answer. He's the patriot. He's the honest one. Everybody else is not only corrupt, but also traitors. That's the narrative. Obviously, that doesn't make for a great foreign minister, right? But I think that it doesn't matter. I really am beginning to, not beginning to, I've believed this for a long time, that the rules of how this stuff is done are changing. And a lot of us, myself included, are stuck in another generational place. ये सही है, ये गलत है. डिप्लोमेटिक केबल रिलीज नहीं करते क्योंकि वो तबाह हो जाता है. और फिर और ये सारी, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था तो ये पूरा हमने 4 साल मुसलसल यही देखा कि जो मेरे और आपके जो ऑपोजिट नंबर्स थे अमेरिका में, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट लिबरल्स, वो कहते थे नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, और फिर वो कर देता था.
नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता, फिर वो कहते, and you know, once you just boldly go where no man has gone before, then once you've gone there, then one man has gone, so then everybody else can follow. So I think it's, in my view, it's quite destructive and damaging, but I also know that there's real electricity around his narrative. People are really energized by it, and I don't want to turn down people, or you know, put down people or be contemptuous of those people. Those people have as much a right to have their views. They love the country as much as I love it. Many of them are, I'm sure, 100 times smarter than me, and you know, so like, it's not like a personal thing, but I think that this pathway is bad news for Pakistan. I give American institutions a lot of credit. Obviously, उनकी history हमसे ज़्यादा है, वो ज़्यादा entrenched हैं. Their institutions survived Trump. उनके जो mechanisms थे institutions के अंदर या लोग थे, institutions survived Trump. हमारे इतने unfortunately नहीं है developed. Khan Saab has really put a question mark on that. That being said, the institutions really came through. I'm actually quite proud of our institutions कि उन्होंने जो constitutional crisis much worse हो सकता था, उन्होंने बचा लिया. So credit to our institutions, despite the fact उनको जितनी गालियां पड़ रही हैं. I agree with you. I think even in 2014, we saw Parliament kind of come around and back up Nawaz Sharif at that time. And I think this is what drives Insafians like up the wall, because when they hear institutions, they see Shahzad and Mosharraf praising the institutions. What they're seeing is the institutions get the praise when they line up against Imran Khan. The problem is, the part that they don't see is that the path that Imran Khan wants to go on is to deny, destroy, and deride institutions so that nobody asks anyone any questions other than Imran Khan. And what Imran Khan says is the last word on everything. And I mean, a lot of them are very transparent about it, which is nice, right? Like, a lot of people have said we need a presidential system in which Imran Khan is not constrained. He's so good and so clean and so pure and so humble and honest that we don't really need Parliament, and we don't need Supreme Court, and we don't need the ISI or the military. We just need Imran Khan to make all the decisions. And that's one viewpoint. It's not a legitimate one in my view. I think it's good for individuals to have constraints and checks and balances, and that's why we have these institutions. And you're right. I think they're incredibly resilient, and they have worked. And I'm sure आप भी देखते होंगे. इस तरह मुझे लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया. अब जब मैं इनबॉक्स में देखता हूँ ना, 16-17 साल के बच्चे मुझे सिर्फ गालियां दे रहे हैं for disagreeing with Imran Khan, it does make me sad, because again, मैं शायद इतना बुढ़ा नहीं हूँ, but I see them as the next generation. के what are you being taught, right? That anybody who disagrees with you is not wrong. That person is a traitor. And उससे slippery slope, effigies को लटकाना और लोगों को मारना इतना ज्यादा नहीं है. So hopefully the next generation does not go down on that slippery slope. I'm really sorry to everybody who's been asking a lot of questions. Sir Mosharraf has a flight in the morning. He's been very kind with his time. Hopefully जब वापस आएंगे हम इनको फिर से तंग करेंगे. Thank you so much sir, for your time. कोई parting words इस youth को देना चाहेंगे आप? No, man. Keep doing whatever you're doing. You know, whether your views are, you know, extremist, not extremist, right wing, left wing, center, whatever it is, young people need to go through the process of having their views and expressing them in the way that they are. Just try not to get, you know, anybody hurt, and try not to get hurt yourself, and protect your mental. Yeah, but that's the challenge. But don't listen to me or to Shahzad or whatever. Take your own path, take your own journey, and you know, may Allah lead us all to the same place in terms of where that journey ends up. Thank you so much sir. मुबारक हो आपको preemptively आपका उम्र. हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारी यूथ के लिए भी दुआ कीजिएगा. Thank you so much sir for your time, and thank you for listening. Take care. Bye bye.